Morning friends. Today I am coming with the topic that is future perfect tense. The third number. Okay. So here the rule is that subject, then shall have or will have, then main verb, then the past participle form of the verb must be used. Like do, did, done, done must be used. Write, wrote, written. Played, play, played, played. Played must be used. Okay. So subject, shall have or will have, plus main verb. उसका पास्ट पर्सन फॉर्म देन ऑब्जेक्ट. एग्जाम्पल्स, राम विल हैव डन द वर्क. यहाँ पर एक चीज़ ध्यान रखो, चुके होंगे, चुका होगा. राम वो काम कर चुके होंगे, राम वो काम कर चुका होगा. हाँ, सीता वो काम कर चुके होंगी. राइट, वो जा चुका होगा. राम विल हैव डन इट. राम इज द सब्जेक्ट. विल हैव auxiliary verb, then do, did, done. Done is the main verb. Do is the main verb, then done, then walk. Walk is the object. Similarly, राम ये काम कर चुका होगा. Similarly, you will have gone there. तुम वहां पर जा चुके होंगे. I shall have written the letter. मैं चिट्ठी लिख चुके होंगे. ठीक है. अमित will have done this. अमित ये काम कर चुके होंगे. सीता वो पढ़ चुके होंगे. ही विल हैव रीड द बुक. वो बुक पढ़ चुके होंगे. चुका होगा, चुकी होगी. राइट. सिमिलरली, ही इज द सब्जेक्ट, विल हैव ऑक्सिलरी वर्ब, रीड इज द मेन वर्ब एंड द बुक इज द ऑब्जेक्ट. SVO formula, subject, verb and object. So another example, Amit will have finish. क्या होगा? फिनिश होगा या फिनिश्ड होगा? फिनिश्ड द. Amit will have finished the game or finished the work. अमित गेम फिनिश कर चुका होगा. अमित जो गेम है, जो काम है और जो खेल है, खेल चुका होगा. अमित will have played the game. Will have played the game. अमित हाँ वो जो गेम है खेल चुका होगा. नेक्स्ट, अमित will have performed the game. और अमित will have gone there. अमित will have slept there. अमित will have worked there. WORKED, worked there. अमित will have gone there. सिमिलरली, अमित जा चुका होगा, अमित खेल चुका होगा, अमित काम कर चुके होगा, वो जा चुके होंगे. So these are the example of future perfect tense. Subject, shall have or will have, then main verb, उसका participle form, then object. So hope you like this video and please like, share and subscribe my channel. And if you do not understand, please comment me in the comment section. And see you in the next video. तब तक के लिए जय हिंद.